morning, honorable members. I welcome you all again to the second sitting of the 12th session of 7th Legislative Assembly. Now we will take up question hour. Start question number 15, Sri Ninongiri. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न हमारे वित्त मंत्री को दिया गया है और उनके जवाब जो है बहुत विस्तार में दिया है, लेकिन जो टेक्निकल जो होता है, टेक्निकल जो रिप्लाई होता है उसमें तो इसमें तो ये लाजवाब है, इसमें तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सर कुछ पंक्तियों के साथ, क्योंकि समय आज बहुत है और आपका बिजनेस भी बहुत कम है, तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। 1 घंटे ही है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इसमें हमने देखा ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है। तो सर आप सबको तो सबसे पहले हमारा सोलूंग का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा वित्त मंत्री जी पूरा हमारा आडी कोट पहन के आए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है, हैंडसम। और आप सबको शिक्षक दिवस के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों पर ही घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। सर हम उम्मीदों के साथ ही हम जिंदा है। मेरे जो प्रश्न था, ये एक छोटा सा 2 गांव है, सिकातोडे सिकाबामन। तो इन गांवों को आप सोचिए सर, 2021-22 में आपने अप्रूव भी कर दिया था, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने भी इसका जिक्र किया था और एनईसी में भी अप्रूव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नेरिट्स का NERSDS का जितना स्कीम्स था उसको नेसिट्स के साथ इसको जुड़ा गया, तो इसमें हमारा रोड जो है वो छूट गया। विस्तार से आपने जवाब दिया कि इसको एक कमेटी होती है, उसमें इसको इसमें लिखा जाता है। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना चाहता हूँ सर दुनिया में भारत बहुत एक शक्तिशाली देश हो गया है। सर चंद्रयान चांद पहुँच गया, लेकिन हमारा सिकातोडे और सिकाबामन जो बस्ती है उसमें एक बस सर्विस भी नहीं हो पा रहा है। दैट इज द मिथ्स ऑफ एक स्मार्ट सिटी। तो मेरा एक आश्वासन आप दीजिए कि इसको हम जरूर टेकअप करेंगे। ठीक है, अगला बार मैं चुनाव आऊँ ना आऊँ, जीतूँ ना जीतूँ, ये हमारा आखिरी एक समय है जहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस बार विधायक हूँ, अगला बार नहीं है, फिर भी उस विधायक उसको काम शुरू करने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि इसको इस बार हमारा नेसिस में आप इसको टेकअप कर लीजिए। धन्यवाद सर। Honorable Speaker sir, Solong GDM Agampe. Thank you sir. सोलोंग के उपलक्ष्य पे सारे अरुणाचल वासियों को, खास तौर से आदि समाज को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई भी है और धूमधाम से 1 तारीख से हम सोलोंग मना रहे हैं, फिर और भी मनाएंगे। CM साहब भी जाएंगे अभी कल परसों कुछ इलाके में, मैं भी जाऊंगा 9 तारीख से 12 तारीख को लेकर सोलोंग मनाऊंगा खूब धूमधाम। तो यही कल्चर है, यही हमारा पहचान है। तो यही पहचान लेके आज भी आया हूँ और इस सदन में तो आपने मुझे देखकर बोला है कि इस उम्र में भी बहुत सुंदर लग रहा है। जवान बहुत धन्यवाद आपको, बहुत। तो इसी तरह से हम लोग हंसी मजाक से जो अगर असेंबली में सब ले जाएगा, लेकिन हंसी मजाक का साथ सीरियसनेस भी होना है। जो ठोस ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होना है हमारा, और ऐसी फुलफिल को लेके ही पेमा खांडू सरकार आगे जा रहा है। पिछले 7 सालों से 8 सालों से आगे जा रहा है और वही मैं बोलने वाला हूँ सर। ये जो प्रोग्राम है NEC का, जो नॉर्थ ईस्ट रोड डेवलपमेंट स्कीम जो है, ये प्रोग्राम 2015-16 से शुरू हुआ और ये 2020 तक का इसका चलने वाला है। तो ये उस समय तो निनोंग इरिंग जी ने प्रपोजल हमें दिया
इस प्रपोजल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके हमने एनईसी पे भेज दिया, लेकिन एनईसी पे वहाँ में वो अप्रूव नहीं हुआ। तो अप्रूव नहीं हुआ तो फिर दोबारा हम लोग अभी बाय डेट टाइम जो स्कीम है ये ख़त्म हो गया है। ये जो नेशनल रोड अभी क्या है, नेसिड रोड्स बोल के इसको वहाँ में जो नॉर्थ ईस्ट रोड डेवलपमेंट स्कीम है उसको नेसिड रोड में मार्च किया गया है। मार्च करके अभी से शुरू होगा, वो अभी से शुरू होगा। तो इसीलिए ये अभी जब शुरू होगा, अभी तो ये गाइडलाइन भी अभी है, 10 दिन का पहले ही गाइडलाइन आया है। तो इसीलिए गाइडलाइन का मुताबिक जब ये शुरू होगा हम लोग इसको आप फिर हम जो स्टेट लेवल जो सिलेक्शन कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी में हम भेजेगा। सेलेक्ट कमेटी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको रिकमेंड करना है कि नहीं करना है, वो सेलेक्ट कमेटी है। सेलेक्ट कमेटी का ऊपर मेरा कोई पावर नहीं है, मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सेलेक्ट कमेटी अगर रिकमेंड करेगा ज़रूर हम भेजेंगे। एंड इफ इट इज़ ऑन द प्रायोरिटी, डेफिनेटली आई बिलीव द सेलेक्ट कमेटी विल ऑल्सो रिकमेंड दिस स्कीम। थैंक यू वेरी मच। Shri Wangling Longdon, question number 4. Speaker, sir, supplementary to my question, start number 4, is this, we all know that Arunachal is a state that has been engulfed by the drug menace. As per the Regional Outreach Bureau, the BOB, it's rampant in 8 districts, out of which Tirap is one of them, which has been affected drastically. It's not a small matter. Drug abuse has distorted and will destroy the whole generation of our youth, the manpower, the knowledge, and the integrity that would have made our state a beautiful state as we all proclaim to be. Now it's a concern of all of us, particularly the representative. We have to be, because drug has got into our system. So I have asked this question in regard to the de-addiction center at Tirap district, which is situated at Tarju near Kunsa. It was a industry building, sometimes used by the college, which was set up there once upon a time. It was renovated for some purpose for which the government would have used it. And overnight, suddenly, it has been turned into a de-addiction center. I've got no hassles about de-addiction center as such. But it's a government property belonging to the industry department. The industry department has no knowledge. The district administration has no knowledge. The health department has no knowledge. Now, how come a building which was substantially used by the government for its department matters be suddenly handed over to a private NGO to run a rehabilitation center? Now, speakers, I have no concern about the rehabilitation center as such. But there should be a modus operandi, because it's a government to government this thing. Or if the industry department handed over the concerned building to the health department for the running of the NGO, the drug de-addiction center. But why was there no agreement as such? There is no agreement, there is no official correspondence, nothing of that sort. And also that there are also complaints by the site of the de-addiction center. The inmates have to be kept properly. There has to be love and care amongst the inmates of those who are suffering from drug abuse. They are suffering, they are not criminals. I won't call them criminals.
They are patients, they are health patients who need to be treated with utter concern and care. And counseling also has to be given. But what impact has this de-addiction center or a detoxification center has made to the lives of those drug, addicts? After they are out for some time, then what happens to their whereabouts is not known. No one is of concern. They get some, annual grants from the government department or from the government of Arunachal. Whether the de-addiction center has been made for making money or to treat the patients which are in utmost requirement of being treated. So this is the situation in Tirap district. What I feel is that should be some official correspondence. And de-addiction centers also should be established in the district hospitals or the general hospitals. If you give the, entire grant to these private NGOs, of course, I have no hassles, as I've said before, Honorable Speaker, sir. Anybody who inspires or wants to sacrifice for the concern and welfare of the people, I have no objections. Most welcome. But then, the orientation and the thought perception should not be to make money out of those centers. That is the concern. So I feel some sort of a official arrangement should be made. And also there are complaints. You're giving suggestions or putting up a supplement? No, it's a very important matter. It's a drug issue which has engulfed the entire state. No, it's not a matter of joke. I mean, almost 8 districts have been engulfed by this drug abuse. And what will happen? Entire generation has been totally destroyed, distorted. The answer has been supplied to you. What is your supplementary? If you can just ask the supplementary. No, I mean, he's saying there's no agreement has been made. The industry department does not know. The health department does not know. Yes. The government, district administration does not know. How come overnight suddenly one fellow came and set up his, de-addiction center there? Who has given that authority? Honourable Minister. Honorable Speaker, sir, as part of question number 4, Sarju, there is a de-addiction center, 10-bedded de-addiction center at Sarju. It is run by Army Home NGOs. 10-bedded home is run by at Sarju by NGOs Army Home, but it's running very nicely. But his question is that depleted building was industrial building. It was out of function. It was totally defunct. It was renovated by the Deputy Commissioner of Tirap district. PAN was funded by the planning department, and they asked for the renovation of that particular building for the using of that de-addiction center. It was renovated for some purpose. De-addiction center is under that for some purpose. As you know, for some purpose means not only de-addiction center, any other officers' work can be done there. But it was particularly renovated by the Deputy Commissioner for using for running of that particular de-addiction center. Now it is running very nicely. Things that we don't have any agreement between the Department of Industry and Health Department, but that building's under the prerogatives of the Deputy Commissioner of that district. So he can use that particular building for any purpose. So it is using for drug de-addiction center. So there is, from my side, there is no any lacuna from our side. It was totally renovated for the use of drug de-addiction center there. So it is running very nicely now. Thank you, sir. Speaker, sir, I beg to differ from the statement given by Honorable Minister Health. It was not purposely renovated or maintained for the drug de-addiction center. Tirap district doesn't have an industrial estate. Industry is one of the main fundamentals
for the uplift of the economy. And all the illegal timber operation that has been carried on in the districts goes to industrial estates of other districts like Changlang and Longding. Now, wouldn't it be better if we have an industrial estate? Why can't that industry building be generated or made into an industrial estate so that the timber mills also can be set up there? But I don't think it was made for the de-addiction center. It was maintained specially after it was in a deliberated condition for the COVID care center, because the general hospital at Tirap at Khunsa lacked the facilities of the COVID care during the COVID-19 period. Now it's a different matter that the COVID patients were not kept. But then there could have been some understanding and agreement, what I'm saying. And without the de-addiction center also being prevailed, now Tirap district has also come out with a very human service to this drug, addict people. Project Patighat has been initiated by Tirap district What police. is your main concern and the supplementary? Yes. What is your main concern and the supplementary? I think you are deviating my from the main question. My concern, The Honourable Minister My has one replied and only something. If you are concern not satisfied, just ask the supplementary on that only. my one and only concern is the drug abuse that has been prevalent in the district. Because now the SP has also taken a very noble initiative by Project Patighat, which is also, the police are maintaining or trying to bring those drug addicts into a proper counseling center. So these issues also can be taken an initiative of by the government. Now, what my concern is that the place where the de-addiction center is not conducive for the inmates to stay. There is no open space, and schools are nearby, residences are nearby, and so it should be kept in somewhere in aloof, in a more open space. So my concern and my supplementary is that de-addiction center should be shifted to somewhere else, so that it does not antagonize those people staying nearby, like the schools be affected, or the public residences who are there be affected by the de-addiction center that is there. So what steps is the department taking into? But where health department also does not know anything, the district administration does not know. So that is the concern. My concern is that. Okay. Thank you, Speaker, sir. Actually, 10-bedded de-addiction center is running there. But out of that NGOs, Care Me Home running, in addition to that 10 bedded, they have 25 seat bedded also. Total 35 bedded are running there very nicely. And moreover, the building was depleted. But after renovation of that building, boundary wall and one more building was also sanctioned from our side. And now it is running very nicely there, and compound also very nicely. Before establishing that de-addiction center in the district, they have conducted so many meetings. They accepted, even all the legislature, they know where to establish there. And even our honorable, our chief secretary also visited that particular place, and they accepted, and they declared, even he gave some money also out of his pocket. Even our deputy speaker, he also visited many a time there. And he also handed, given 1-2 lakhs I have seen there. I got the record there. I have visited, I myself also visited that place. And now, even our government has recognized that de-addiction center. They got to even one silver medal also in Independence Day. So we are going to upgrade that 10-bedded Sarju de-addiction center to 50-bedded de-addiction center within this financial year. This is from our side. Thanks. His concern is whether the location is Location is conducive. very good. If it is, you may send some delegation to see there, visit there. If you do not satisfy,
From here, you can send some delegate to visit that particular place. That is my thing, sir. One You last have supplementary. your last supplementary. Last supplementary. Yeah. Now, my concern, as I've said before, is nothing to do with the de-addiction center. All my praise and my thanks to the de-addiction I center. think both That the is not my member and concern. the honourable minister are on a different frequency level. No, how it runs, it's good if the health department praises it or if the government praises it. My concern is that whether a government building can be, without any agreement, without any official notice, be handed over to a private entrepreneur. If this is the case, then this situation will come out to the entire state. There will be people who will be capturing the government establishment, private individuals. Now, and also one thing, if from 25 to 50 bedded, even 100 bedded, I've got no concern. All my best wishes to the de-addiction center. It's for a purpose, it's for the society, but let him or her make that de-addiction center in his or her own land. There is a situation, we have a college site in Tirap district, in Charjo. That college site can at no cost be given to run the de-addiction center there. Now, before any activities or action is taken, I think the public also should be made aware of. And public also should be taken into confidence. If he or she establishes in our own plot, I've got no idea, no objections. But the government building and other buildings which are matter of public concern should not be distributed to individual capacities, private individuals. Sir, as already I have mentioned, the Deputy Commissioner of Tirap has allotted that particular bidding to the de-addiction center owners, the NGOs. He knows better because earlier I have mentioned that we don't have any agreement between the health department and that industry department. But it was allotted by the Deputy Commissioner of Tirap district. As for your information, his PSO, Popong Luang, was also admitted here. He is now well. Now he is voluntarily serving the people here. If that de-addiction center is not good, how can they will work there? This is the matter. Thank you, sir. I will not mention anymore. Thank you. Okay, we move to the next question. Question 23. Sri Lombotang. Please don't make statements, just if you have a supplementary, be to the point. Thank you, Yeah. Mr. Speaker, sir. रिप्लाई बड़ी विस्तार से मिनिस्टर इंचार्ज ने दिया गया। इसमें मेरा केवल एक ही तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर, जिस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था आरी स्टेज में ड्यूरिंग 22-23 अप्रूव नहीं हो पाया, देन अगेन बी स्टेज में 22-24 में दिया गया, उसको भी अप्रूव कर नहीं पाया, और भी फाइनली आरी स्टेज में 23-24 में कंसिडर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया। ऐसा होने से रेस्टोरेशन वर्क्स में जिन लोगों को एंगेज किया गया वो छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर सब सफ़र हो रहा है कि पेमेंट रिलीज नहीं कर पाने से। तो इन सब केसेस क्या सरकार अभी 23-24 आरी स्टेज में जिस प्रोजेक्ट को सैंक्शन और अप्रूव करने जा रहा है, तो इन एंटिसिपेशन ऑफ सैंक्शन एंड द फंड रिलीज एट आरी स्टेज 23-24 कि अभी एटलीस्ट 50% को भी कुछ मैनेज कर पाएगा सरकार फंड रिलीज करने के लिए, सो दैट सफरिंग कॉन्ट्रैक्टर सबको डिपार्टमेंट को मीटअप कर सके। थैंक यू। Honorable Minister. अध्यक्ष जी, जो मेंबर्स ने
जो सवाल उठाया है और सप्लीमेंट्री जो सवाल उठाया वो भी सही है। डिपार्टमेंट को पूरे के पूरा मालूम है कि ये जो हाई टेंशन 11 kV लाइन था ये वॉस्ट अवे हो गया रहा, पूरा फ्लड में डैमेज हो चुका था। तब वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इमरजेंट मैनर में उनको रेस्टोर कर दिया, फुल्ली रेस्टोर कर दिया, लेकिन उनके लिए कोई सैंक्शन नहीं था। तो बाद में ऑनरेबल मेंबर्स ने फिर हमें लिखा चिट्ठी कि इसको सैंक्शन करना है। तो बाय द टाइम आरई में लेना वाला था, आरई में इसको सैंक्शन नहीं हो पाया। तो जब बी का सवाल आया, बी में आया, तो बी में ऐसा है कि बी में जब प्लानिंग के पास आता है तो नया काम के लिए आता है, जो हो चुका है वो मालूम नहीं था। शायद बी में इसीलिए दिया है कि 10 लाख रुपया की टेंडर कर शुरू करना है, तो वो भी तो उस पैसा से तो होगा नहीं, ऑलरेडी काम हो चुका है, इसलिए बी में भी ये नहीं हो पाया। अभी आरई में हम जरूर कर देगा, उसको हम 100% आश्वासन देता है आरई में हो जाएगा, क्योंकि काम ये इमरजेंट मैनर में किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी अच्छा काम किया है, तो ये हम आरई में जरूर कर देगा। लेकिन आप बोला है अभी 50% हो पाएगा, क्योंकि बी हो चुका है, सभी डिपार्टमेंट का बी हो चुका है, प्लानिंग से फाइनल एलोकेशन डिपार्टमेंट को हो चुका है, अभी प्लानिंग का पास कुछ नहीं है। तो अगर कहीं कुछ में हम वो करके हो पाएगा तो सीएम साहब से हम बात करके वो जरूर, अगर उपाय होगा तो करेगा, नहीं तो हम आरई में 100% कर देगा। आपका सोलम गिफ्ट मिल गया ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्री वांगलिंग लुआंगडोंग एंड श्री निनोंग इरिंग। Very generous. I'll ask. Thank you, sir. The CAMPA, the compensatory administration fund, it is especially, this fund has been given to the states of these, especially the northeastern states and Odisha, where, you know, we really control the ozone layer, and we are the people who have the forest. But accordingly, I think the central government also is not providing the necessary funds which we expect. And similarly is the case with that of the distribution of funds in the whole of Arunachal Pradesh. So there is a disparity, and of course in details it has been given by the Honorable Minister. But some queries would be there, sir, like especially in Pasighat, we have got two divisions. One is the forest division, and the other is the Deering Wildlife Sanctuary. So here you'll see that Deering Wildlife Sanctuary has been, you know, denied. There is a lot of paucity of funds, because that is a very important area where even the Bengal floriculum, which I always mention, we have the elephant corridor there. And in my personal visit to that Deering Wildlife Sanctuary, I've seen a lot of deer, a lot of elephants, a lot of birds. The officers there are really working hard. But even though they are working hard, they don't have the backup. So, like say the purchase of speedboats, I think that is very necessary. We should do that also. Then there is an animal and man conflict. So everywhere we are seeing, especially in my constituency, that is in the Ruksin range, the Poba range. So always the animals come. Then this, in my own fields in Partung or in Mariam area, elephants, they come, they destroy crops, and it's a threat to life. So we have to have some provisions like, electric fencings. Not exactly the electric current, but the repelling ones, solar protection, so that the elephants should not be affected. People should not start shooting them. But again, we have to protect ourselves also. So man and animal conflict is always there, sir. That is one. Then there is a lot of necessity of watchtowers. So in this CAMPA fund, I heard that proposal given from, I think, the PCCF also, but those
watchtowers were not provided. Watchtowers are very necessary, especially to control the timber mafias or any kind of illegal activities that take place. So even it can be guarded. And if you don't have these watchtowers, the elephants will come and they may attack even your own staff also. So those kinds of things are necessary. And I would request you, sir, and you can reply there, that what are we going to do, not only in, I'm not speaking of Pasighat, but the whole of Arunachal, what are the programs that you're taking for afforestation? Because yes, we are getting the funds, especially itself, it mentions compulsory afforestation program. So we have to go for afforestation. So इसमें आप अच्छा से हमको जवाब दीजिए, I think, but your reply is it has been very thoroughly done, and I am very grateful to you for that, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सीनियर ऑनरेबल विधायक ने जो सवाल पूछा, तो ये कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये भारत सरकार ने 1995 के बाद आफ्टर TN गोडा वर्मा जास्मिन के सुप्रीम कोर्ट के जास्मिन के बाद तब ये जाके कैंपा स्टार्टेड फ्रॉम एडॉक कैंपा. इट वाज स्टार्टेड 2010 को ये एडॉक कैंपा के तहत ये भारत सरकार ने स्टार्ट किया. मैं थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ. एंड उसके बाद 2016 ये CAF कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड उसको एक्ट में बदल गया कि स्टेट अथॉरिटी कैंपा. उसके बाद 2018 से CAF रूल्स के तहत तब भारत सरकार ने पूरे भारत में और नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में ये फंड देना शुरू किया. ये फंडिंग कैसा होता है? लोग आपके माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोग, हमारे लोग, यहाँ के प्रदेश के लोग, जनता लोग, कुछ लोग, वो कैंपा क्या चीज़ है और किस प्रकार से, और फंडिंग कैसा होता है और ये क्या काम में सरकार देते हैं, उसको कुछ लोग कंफ्यूज है. ये खास करके कैंपा फंड जो हमारा प्रदेश में जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि हमारा बड़े बड़े हाईवे बन रहा है, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कि हमारा कामिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, हमारा जो आपका टावर ये 1132 kV ट्रांसमिशन लाइन, बॉर्डर पे हमारा जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सारे डिफॉरेस्टेशन को उसको कैलकुलेशन करके कितना हमारा यहाँ प्रदेश की हमारा ट्री कितनी फाइलिंग हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, उसको कैलकुलेशन करने के बाद ये भारत सरकार ने उसको फंड को वहाँ डिपॉजिट किया जाता है, जिसमें से भारत सरकार वहाँ 100% डिपॉजिट करने के बाद हमें 90% रिलीज करते हैं और 10% भारत सरकार में, ताकि इस कैंपा फंड के जरिए जहाँ जहाँ जो डिफॉरेस्टेशन हुआ उसको APO बनाकर प्रत्येक साल में हम सरकार में कॉर्पोरेट फंड के तहत प्रत्येक साल को हम 10% इस फंड से हम APO बनाकर भारत सरकार से हम अप्रूवल लेकर आते हैं कि 10% जहाँ जहाँ में जिस जिले में जहाँ में डिस्ट्रक्शन, जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ उस पर हमारा प्लांटेशन करना है. तो ये पूरे भारत सरकार से सारा अप्रूवल, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, ये भारत सरकार से अप्रूवल लेकर करते हैं. और ये जहाँ में हमारा यहाँ 3 प्लान है जिसके कैंपा के रूल के तहत हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन
catchment area treatment plan, and net present value wildlife management plan and interest component. हम इसमें कैंपा के तहत हम 5 कंपोनेंट को ले सकते हैं। ये भारत सरकार की नीम है, ये उनके संविधान में रूल में, इसी रूल के अंदर हम ये फंड को एपीओ बनाकर हम यहाँ से रिलीज करते हैं। और आज आप लोग को सदन को मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीम अरुणाचल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड हॉनेस्टली, ये कहीं चीज़ में हम ट्रांसपेरेंसी, ये सरकार ने कहीं ऐसा कहीं छुपा कर, कहीं लोगों को गुमराह कर कहीं ऐसा काम नहीं किया। ये ट्रांसपेरेंसी है सबके सामने। मैं सदन में भी ये बताना चाहता हूँ कि आज तक भारत सरकार ने हमें रिलीज किया कि कैंपा की 90% कैंपा फंड में आपके 29 अगस्त 2019 को 1588 करोड़ एंड 24 मार्च 2022 को 612 करोड़, जिसमें से अभी अपने सरकार में यहाँ में 2171 करोड़ वो अपना सरकार में है, प्रदेश सरकार के अकाउंट में। और इसको हम यूज ऐसा नहीं कर सकते, हम उसको 10% कॉर्पस फंड को 10% इस 5 रूल के नेम पर 10% हम एपीओ बनाकर भारत सरकार से अप्रूवल लेकर कौन कौन डिवीजन में, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसी डिवीजन पे हम एपीओ बनाकर पूरे डेफो से उनका एस्टीमेट मांगा के फिर सैंक्शन होने के बाद अब पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में डेफो के डिवीजन में हम फंड को बेचते हैं। तो इसमें अभी तक 2021 को 199 करोड़ एंड 21-22 को 258 एंड 22-23 को 189 करोड़। आपका जो क्वेश्चन था कि 22-23 में कितने फंड रिलीज हुआ, वो 196 में से हम लोगों ने 189 करोड़ हम लोगों ने रिलीज किया। इसलिए, और ऐसा नहीं कि आपको जो वाइल्ड लाइफ हर डिवीजन में, और ये भी आपने सवाल किया कि आप रेंज में भी क्या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कहीं रिलीज करते हैं क्या, और आपको मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सदन में ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कहीं रूल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में, रेंज वाइज में वो फंड रिलीज करने का कोई रूल में नहीं है। तो हम डिवीजन में हम फंड को रिलीज करते हैं, एपीओ वहाँ से बनाते हैं, कौन डिवीजन में क्या क्या जरूरी है, इसी प्रकार ये फंड को आज तक हम लोगों ने यूटिलाइज किया, जिसमें से 647 करोड़ आज तक जिस रूल आने के बाद, कैंपा अथॉरिटी रूल आने के बाद हम लोगों ने अभी तक पूरे प्रदेश ने, सरकार ने अभी तक डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में हमारा जो वाइल्ड लाइफ, जहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ हमारा सेंचुरी है, उसमें भी हम लोग पूरे हर डिवीजन में, कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हम लोगों ने डिनाई नहीं किया, सब फंड हम लोग प्लेस किया है। तो इसलिए आपने कहा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि हमारा वहाँ वाच टावर का जरूरी है, और मैन और वो आपका एनिमल का, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक, वो उसका पावर सोलर इलेक्ट्रिक का जरूरी है। तो हम लोगों ने जरूर इस बार, अगर कैंपा में इसको हम लोग इस बार उसको टेकअप नहीं किया, तो हम जरूर हमारा अधिकारी से बात करके, अगर नहीं डाला तो मैं इस साल के कैंपा में आपके डियरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जरूर, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया उसको जरूर डालेंगे। थैंक यू। Next, Because I'm also this thing. I thought you gave chance to your No, I colleague. mean it's board of questions, so I should also be given a chance. Acha, you will not miss the chance. Please. Need base. Thank you, Speaker, sir. And I would like to ask supplementary to the Honourable Minister Forest. I also stand by what my colleague, Mr. Ehring, has also stated. There has been a disparity in the allocation of funds as far as division-wise. Out of the 196.93 crore,
that has been earmarked for this year's Campa, according to the Honorable Minister, 183 crore has been released. And out of the 183 crore that has been released, Khunsa and Deomali Forest Division have received very negligible sum. And I would also like to state, taking an opportunity, that Deomali Forest Division was one of the richest forests in Arunachal. The magnificent Holong and Mackay trees, totally denuded now, destroyed, were grown there. And the maximum revenue paid during the forest tree permit era was from Deomali and other divisions, of course. There are also other divisions like Namsai, Changlang, Jerampur, Meo, and all this. They were also there. Now the amount that has been earmarked through Campa for this, once upon a time, very rich forest divisions, we are treating them as outcasts. No more milk, you have nothing to do with us. So hardly a crore here and a there has been earmarked for them. So the discrepancy in allocation of fund is very relevant. So what steps is the minister concerned going to take to see that equal parity of fund allocation is made to forest divisions, particularly in those areas? And why I'm deeply concerned is also, I've also asked the DFO of Deomali, of Khunsa, and the range officers there, because my constituency, where this border range happens to be there, it's very adjacent to the Assam border and highly disputed, very vulnerable, and very hot spot as far as the border affairs are concerned. So I had requested the Deomali Forest, DFO, Division Officer there, to plant lakhs of trees in the border areas. And in my range, only 5 hectares of regeneration of trees was taken this year. And as Honorable Member, Mr. Ering has also said, elephants are also, create havocs in those areas. People are scared to plant, to grow rice because of this elephant menace. And how many watchtowers have been built there? And what steps is the forest department taking so to counter this elephant menace? These are issues that have to be taken by the department. But when there is no fund allocated for the concerned department, they cannot do it empty-handed. So my question to Honorable Minister is whether, now the year is over, we are in the election process, I do not know what will happen, but even then, we should leave the greenery and the trees for the younger generation. Let it remain. Plant more trees, grow more. But how can you grow without the supplements? So the supplements should be provided equally to all the divisions. And particularly, please don't forget also, the revenue that was earned by these divisions. It may have been small in size, but then they generated a lot of income. A lot of activities was done by this Deomali Forest Division. So please don't forget, Honorable Minister. Thank you, sir. So I think you have answered everything. Disparity was the main question, and in supplementary, if you want to make a statement, you can do. माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय विधायक जी ने जो कहा कि हमारा देओमाली फॉरेस्ट हमारा तिराप डिस्ट्रिक्ट को डिप्राइव किया जा रहा है और फांड देने में इक्वल नहीं है। इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को, ऑनरेबल मेंबर को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपका जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो कामिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट पे है, जिसके लिए उसका जो जितने भी हमारा ट्री का नुकसान हुआ, पहाड़ नदी का नुकसान हुआ, उसका जो कंपेंसेट वो निपको ने भारत सरकार को वही फंड को डिपॉजिट किया, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो डिफॉरेस्टेशन हुआ
वो फार्म को उसी डिस्ट्रिक्ट उसी जगह पे इसको एफोरेस्टेशन करना है, प्लांटेशन करना है। आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में जिसमें जो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि हाईवे, ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ हाइड्रो पावर, जहाँ प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ नहीं हुआ, वहाँ कंपेंसेशन भारत सरकार में उसका फंड डिपॉजिट नहीं है। इसके वजह कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने के वजह, कहीं वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होने के वजह वो फंड जो है, चाहे वो कंपनी से हो चाहे वो सरकार से वो फंड जो है भारत सरकार को डिपॉजिट नहीं होता है। इसलिए कोई डिस्ट्रिक्ट में इसका प्लांटेशन और कैंपा में फंड थोड़ा कम लेकिन जाता नहीं देता बोल के नहीं है, फंड तो पूरा बेचता है, फंड पूरा बेचता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम बेचता है। लेकिन मैं इस बार आपके जो माननीय विधायक जी ने जो सप्लीमेंट्री कहा उसको मैं जरूर ध्यान रखूंगा, और आने वाला में इलेक्शन के बाद भी आने वाला में भी आपका जो ग्रीनरी के लिए जो देवमाली ने जो आपने सदन में जो रखा है उसको जरूर आने वाला एपीओ में इंक्लूड करूंगा। थैंक यू। Start question 18, Sri Lombotai. सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस प्रकार की है कि सरकार रिप्लाई जो फर्निश किया गया है उसमें लिखा सम पार्ट्स ऑफ द ईटानगर एंड नाहरलगुन टाउन फॉल्स अंडर द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द्रुपोंग रिजर्व फॉरेस्ट। In such cases, my supplementary question is, which sectors under falls under Itanagar Wildlife Sanctuary and Drupong Reserve Forest, and how much land occupied by private individuals and government establishment too in such sectors, which are falls under wildlife and reserve forest. Thank you, sir. Honorable Minister. It in land ka rake. Land. Land. Land का. Speaker sir, जो स्तर क्वेश्चन 18 में जो पूछा गया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन रिगार्ड टू लैंड अलॉटमेंट इन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जहाँ तक एनओसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है, सरकार की ओर से सर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लैंड अलॉटमेंट कमेटी बनाया गया है, उसी में फॉरेस्ट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि डीएफओ होगा या उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा। तो इसलिए कौन एनओसी देगा, कहाँ से देगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में वह फैसला हो जाता है कि हम लोगों के पास जो है पूरा सर्टिफिकेट आने के बाद सरकार में उसको डीसी से जब कमिटी से डायरेक्टोरेट में पहुँचेगा या सरकार में पहुँचेगा, उसी समय हम लोग का कुछ वेरिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी बना के नोटिफाइड किया गया है कि इतना जिसको जो नोटिफाइड सर्टिफिकेट होगा प्रोड्यूस होगा उसको लीगल अलॉटमेंट देगा बोल के। स्पीकर सर, ऑनरेबल सीनियर मेंबर्स का जानकारी के लिए कुछ ऐसे कि मैंडेटरी जो चेक लिस्ट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लैंड अलॉटमेंट कमेटी को दिया गया है, उसी का अनुसार जो है हम लोग लैंड अलॉटमेंट यहाँ से अप्रूव करके भेजता है। और जहाँ तक ईटानगर का जो 2 द्रुपोंग रिजर्व फॉरेस्ट और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया जो है, तो एरिया का अभी मेरा पास एग्जिट जो है एरिया का कितना स्क्वायर किलोमीटर है मेरा पास अभी नहीं है। तो इसी सेशन का बाद आपका रिक्वायरमेंट जो एरिया का आप देखना चाहे तो मैं अपने डिपार्टमेंट को एडवाइज करूँगा कि आपको यहाँ का रिक्वायरमेंट जितना फॉरेस्ट एरिया कितना है वो दे देगा। तो जहाँ तक ये ईटानगर कैपिटल का सवाल है लैंड का अवेलेबिलिटी का, जितना मैक्सिमम आपको इतना जनरल फिगर बता दूंगा कि एरिया जो मैक्सिमम 2 फॉरेस्ट एक
द्रोपोंग रिजर्व फॉरेस्ट और एक ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है। तो उसी का कारण जो है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी ईटानगर में बहुत से लिमिटेड एलोमेंट देते जाता है कि सारा जो मैक्सिमम जो एलोमेंट जो अप्लाई किया अभी तक पेंडिंग है। तो एज एंड व्हेन हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रिजर्व और ये का हम लोग का प्रॉपर आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ का एलोमेंट फिर प्रोसेस शुरू होगा। अभी भी ऐसे बात है, एलोमेंट पेंडिंग नहीं है, लेकिन एग्जिट एरिया कितना है आपको सेशन के बाद फिर आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा। थैंक यू। स्पीकर सर, गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया गया कि फर्निश करेगा इन लेटर स्टेज, ठीक है, विथ एक कंडीशन सर, मैं इसमें सबमिशन कि फर्निश कीजिए, बट सेक्टर वाइज ईटानगर एंड नाहरलगुन का कौन कौन सा सेक्टर किस किस फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में के अंदर है, उसको सेक्टर वाइज इंडिकेटिव दिखा के फर्निश करने से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। स्पीकर सर, आपको सेक्टर वाइज नहीं है, आपको हम कॉलोनी वाइज पूरा फर्निश करके दे दूंगा। थैंक यू। Next, start question 14. Sri Ninongiri. Thank you, Mr. Speaker, sir. The relevant question I would like to put up to the Minister of Land Records. Of course, it is the responsibility has been given to the estate officer of the concerned districts. The issue here comes. Of course, we would like the intervention of the Honorable Chief Minister also. His guidance should be there, because the cases regarding the legal cases and the courts, ये जो उच्चतम और उच्च न्यायालय में जो जितने भी यहाँ उसको स्टेज लेके बैठा हुआ है, वो समस्या उसी के साथ ही है। तो इसके लिए इसका एक मॉडस ऑपरेंडी या इसका यार्डस्टिक्स लेके इसको इस जो समस्या का कैसा समाधान निकालना है, ये सिर्फ हमारा रुकसिन में या सिले में या पासीघाट में नहीं है, बल्कि पूरा अरुणाचल में शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या हमारे छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वहाँ में तो ये समस्या होता ही है। तो हमारा यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा सर, और एक सुझाव भी और उनसे एक आश्वासन भी मैं चाहता हूँ कि इसमें एक यार्डस्टिक्स बना किस प्रकार से इनका हम समाधान करें। हम ये भी नहीं चाहते कि उनको हम एविक्ट करें, क्योंकि 20 साल से बैठा हुआ, 15 साल से बैठा हुआ इलीगली, और वो वहाँ आए थे एज टीचर्स आए थे, या एक VLW के हिसाब से आए थे, या पियोन हिसाब से आए थे, तो उस समय घर नहीं था, तो घर बना लिया, वो धीरे धीरे जाके वो आलिशान बिल्डिंग हो गया। तो उसमें एक आदमी का कब्जा में 3 एकड़ है या 4-5 बीघा तो होता ही है। तो जो गवर्नमेंट एलोकेशन जो नॉर्म्स है उसको जैसे 500 स्क्वायर मीटर्स करके रेसिडेंस और कमर्शियल का 300, वो हिसाब से भी अगर आप एक शुरुआत करें तब इसका एक समाधान आएगा। नहीं से ये सर, अभी जितने भी हमारे केसेस हैं सब कोर्ट केस में, और फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर मैक्सिमम आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बिकॉज दे हैव बीन पोस्टेड देयर, दे डिडंट हैव हाउसेस, तो वहाँ बेचारा वो क्या करें, घर बना लिया और वो उसी से वो रेगुलर रहने लग गए। ओनली इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी बीलाट एक सर्कल है, वहाँ वी आर नॉट इवन इशूइंग 1 प्लॉट ऑफ लैंड ऑल्सो और 1 इंच ऑफ लैंड टू एनी प्राइवेट पर्सन, बट रुकसिन एंड सीले वर देयर सिंस द लास्ट 15-20 ईयर्स। अभी ऐसा भी हो रहा है, सर गवर्नमेंट जो लैंड है, से वेटरनरी डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, या इस बार जस्ट रिसेंटली BRO का लैंड है, उसमें लोग कब्जा कर लिया, बोलता है हमको गिफ्ट दिया हुआ है। तो जस्ट अबाउट नॉट इवन अ ईयर, 6 months बैक उसमें BRO का ऑफिस था। तो उसमें हम जब DC साहब को बोलते हैं सर ये तो हम लोग वहाँ से क्या करें, लीगल नोटिस आ गया है, स्टे ऑर्डर आ गया है, एंड इनफैक्ट कोर्ट में भी इन फेवर ऑफ दिस इंडिविजुअल, जैसे वेटरनरी का लैंड है रुकसिन में, दैट हैज बीन अलॉटेड टू अ सर्टेन पर्सन। Now this has by the instructions of the Honorable High Court. We are not against the the knowledge of this thing of the High Court, but how is it that government land को, allotted land को आप किसी इंडिविजुअल को आप देंगे, ये हमको समझ में नहीं आता है। और हमारे जो अफसर है उनको भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल, दे मस्ट चैलेंज इट इन कोर्ट।
अगर आप कोर्ट में आदमी नहीं भेजेंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन देगा ही, जैसे ये केस हुआ था। तो ऐसा आप सर, मेरा आपका माध्यम से हमारे जो सरकार है उनको मेरा यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या हमारे स्टेट ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जब भी कोर्ट केस होता है, जब भी लीगल नोटिस आते हैं, उनको वहाँ पेशगी होना चाहिए एंड दे मस्ट कॉन्टेस्ट इट। नहीं उनसे ऐसे भी एक्सपार्टी से डिसीजन करके हमारा सब लैंड, सब ज़मीन सबको एनक्रोचर्स को वो दिया जाएगा। धन्यवाद सर। Honorable Minister. स्पीकर सर, जो सीनियर हॉनरेबल मेंबर जो अस्तर क्वेश्चन 14 में जो इंक्रोचमेंट इशू के बारे में जो कंसर्न रेज किया गया है कि ये एक कॉमन कंसर्न है, तो उसको देखते हुए पेमा कंडू जी के नेतृत्व में जो लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स में हम लोग ये उसको जितना हो सकेगा इंक्रोचमेंट को रुकने के लिए आज तक इस ढंग का एलोमेंट नहीं दिया है। तो जितना भी एलोमेंट दिया गया कि ये पुराना एक केस है, तो पुराना केस को देखते हुए हम भाग तो नहीं सकते, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करेक्टिव मेजर जो है हमने कोशिश कर रहा है। तो बहुत से चीज़ है कि हम लोग जब करेक्टिव मेजर जो मेजर लेता है कि यहाँ से डायरेक्शन सरकार की तरफ से जब जाता है, हमारे फील्ड लीगल इंटरवेंशन आ जाता है, तो उसको देखते हुए तो हमने सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी इंक्रोचमेंट है वो पनिशमेंट देना या कोई भी अपना तरीका से लीगल वे में देना है। तो मेन जो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम जो है सरकार से नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है कि यहाँ तो पता नहीं चलता कि किसका लीगल है, सरायत है, किसका ये है। तो उसको देखते हुए जब हम सरकार की तरफ से उसको एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो आपका रेफरेंस जो है रॉक्सन टाउन का आपका नाम तो नहीं बता पाऊंगा हाउस में स्पीकर साहब, टोटल नंबर्स को मैं बता दूंगा। आपका रॉक्सन टाउन में एज पर द रिपोर्ट ऑफ द डीसी 8 केसेस पेंडिंग्स इन डीसी कोर्ट। तो ये हमारा जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट को कैंसिलेशन का ये करने के बाद केस पेंडिंग है, तो हमने सरकार की तरफ से दिया था कि कैंसिल के लिए। और एक जो है सीजेएम कोर्ट में पेंडिंग है, और बाकी और भी है, ये डिटेल का एक सेशन का बाद आपको दिया जाएगा रिकॉर्ड जो है, बहुत से चीज़ कुछ ऐसे पेंडिंग है। ये जस्ट आपका रॉक्सन का चौथा सा एक एग्जांपल है। अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में, ईटानगर में भी, ईटानगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी जितना इलीगल एलोमेंट दिया गया है 7 साल पहले, 10 साल पहले, उसको सरकार जो जब एक्शन लिया था, अभी जितना सारा का सारा प्रॉब्लम जो है कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट में अब हाईएस्ट जो है केस कोर्ट में हम लैंड डिपार्टमेंट ने जीता होगा, ये सरकार ने। तो अभी हमारा कोशिश ये जारी रहेगा कि जितना हमारा पास सरकार का ज़मीन है, डिपार्टमेंट का ज़मीन दिया गया, उसको बचाने के लिए कोशिश कराऊंगा। तो ये बचाने के लिए सरकार से सिर्फ नहीं होगा, जितना भी पब्लिक को भी उसके साथ आना जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी है उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी सरकार ऐसे हो जाता है कि हम तो रिकॉर्ड को देखता है, तो डिस्ट्रिक्ट फील्ड विजिट तो कर पाता नहीं है, तो उसको टाइमली सरकार को भी बता रहे कि एलोमेंट गलत जा सकता है। इसलिए अभी तक ये 6 साल 7 साल में अभी तक जो इलीगल क्या बोलते हैं एलोमेंट नहीं दिया है, और जितना भी ये है स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी जाके उसी तरह के मेंटेन करेगा। लेकिन कुछ जो है लिटिगेशन आ जाता है कि हमारा जो काम का स्पीड अप जो करना है कि उसमें रुकावट आ जाता है। थैंक यू। Start question number 8, Sri Wangling Londo. Thank you, Speaker, sir. For my start, question number 8. I have not much to say. The only thing is that Punsha town, one of the oldest state, has been deprived of good roads, proper sanitation and drainage system. Seeing the condition, we 4 of our legislators, together in a combined note, had submitted to the Honorable Chief Minister last year, to be precise, on the 25th of July.
for earmarking an amount of rupees 15 crore for the improvement of Kuncha town road, only the township. Now the present status of the road is that hardly two men can pass side by side. So all towns in the state are in a growth process, and I think one of the oldest towns, district towns in the state, also should be taken ample care of. So my request to the Honorable DCM sir and Minister of Planning is whether he will assure for earmarking and allotting that 15 crore that the four of us legislators had combinedly put in a note form. Thank you. Honorable DCM. Sir, the question put up by honorable members is on the Chief Minister's Comprehensive State Road Development Plan. Of course, the plan is prepared by the Cabinet Committee for 5 years. It was approved by the Cabinet Committee on the 1st November 2019 till 2024. So under that plan only 366.40 lakhs was allocated for improvement of Khonsa township. The entire fund is already allocated. The replies are given in details. But what I would like to put my statement in the House is that this Chief Minister's Comprehensive Road Development Plan is prepared by Cabinet Committee, allocated to the PWD department, and PWD department decides which are the areas to allocate the fund accordingly. So accordingly, the the decision of the PWD comes to the planning department, and planning department is accordingly allocated. So this question should have gone to PWD instead of planning department. However, we have taken report from the PWD department also. The PWD department has stated that remaining question, I do not know about the 15 crores demanded by the all honorable members, but I know that initially, as far as urban area is concerned, the first urban town was approved for Khonsa township during 2011. 15, I do not remember, 15 crore or 25 crore was allocated for CC that road in Khonsa township as a pilot project initially. That was done during the Nawam Tukki's chief. Thereafter, this comprehensive scheme, the project came. Now, this project is from approved during 2019. It will go up to 2024. Estimated cost of the plan is rupees 966.66 crore total fund. Expenditure till 31st/3/2023 is 277.93 crore. Proposed allocation during 2023-24 is rupees 369.55 crore. Road length to be covered under the plan is 570 kilometer. Road length covered till 22-23 is 184.72 kilometer. Balance road length to be covered is 384.58 kilometer. Target for 23-24 is 231.03 kilometers. So the progress of the plan was delayed due to COVID-19 also. So now we have taken a report from the PWD that what will happen as per the question made by the honorable member, the remaining portion of the Khonsa township. They have said that it is already replied that remaining land could not be covered under CMCRDP during 2019. We will be taken up in CMRDP 24-29. तो 24-29 का जो नया प्लान होगा उस पे we will be, the PWD will take up under the Chief Minister's Comprehensive Road Development Plan 2024. Thank you, sir. The question hour is over now.
Honorable members, I have received requests from Sri Fusum Khimhon, Sri Nawam Tuki, and Sri Kaling Moyang for leave of absence, and I have allowed their leave. Now we'll take up bills for consideration and passing. Sri Kamlung Mosang, Minister of Town Planning, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Bill 2023. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Bill 2023 be taken into consideration. Any members willing to take part in the bill may do so. I think there's no one to take part in the bill. Now Sri Kamlung Mosang, the town planning may reply. Mr. Speaker, sir, with the starting or opening of Doni Polo Green Airport at Holongi, as well as two more airports, one at Pasigat and other at Teju, the need for development of this airport and its adjoining area has been felt. To be precise, the objective of introducing this particular bill is for regulating the growth and development of airport surrounding areas with dedicated manpower for proper planning, upgrading, maintaining of this airport. And this proposed authority will be headed by our State Chief Secretary as a chairperson, and then Secretary or Commissioner, Finance, PWD, Planning and Investment, Civil Aviation, Secretary Health and Family Welfare, Disaster Management, Land Management, Town Planning, BCCF, and Director Town Planning as members. So this bill has been brought in this August House for consideration and passing. Question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up the bill. The question is that the clause 2 to clause 15 of the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 15 and the schedule stand part of the bill. Now the question is that the clause 1 enacting formula and the short title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title stand part of the bill. Kamlung Mosang, Minister of Town Planning, may move the motion for passing of the bill. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Bill 2020 pass. The question is the bill be passed. In favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Bill 2023 is passed. Next, the Arunachal Pradesh Court Fees Bill 2023. Sri Chaunamen, Deputy Chief Minister, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Court Fees Bill 2023. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Court Fee Bill 2023 be taken into consideration. Any members willing to take part? I will take part. The Speaker, sir, while supporting the bill, the Arunachal Pradesh Court Fees Bills 2023, I would like to throw some lights
before the August gathering here. The Court Fees Act 1870, which is a free independence, a pre-constitutional law extended to the state of Arunachal Pradesh, and by virtue of its extension clause is followed by the High Courts in Arunachal Pradesh as per Assam Courts Fees Amendment Act to 1972. Since Arunachal Pradesh does not have Court Fees Act till date, the reason being this bill has been brought before this legislature, this assembly. Regarding this court, Arunachal Pradesh Court Fees Bill 2023, I would like to inform the August gathering that due to non-availability of Court Fees Act 2023, Court Fees Act in Arunachal Pradesh, the High Court was adopting the Assam Court Fees Amendment Act 1972, and then lower court below, the court was running without having any bills or acts. And the amount which was received by way of filing or in lump sum amount which was received was used for miscellaneous items instead of depositing in the state exchequer. Now, since the bills which has been brought today has many amenities, and that apart, the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, by letter dated 6/3/2023 has directed all the states to enact their own state acts by way of Court Fees Acts. Therefore, this act has been brought and introduced yesterday by our Honorable Chief Minister cum Minister of Law and Justice. Here, the court fees which appears as entry 3 of list 2 state list of the Constitution of India is within the legislature competence of the state legislature to enact the laws as such. Now this bill has been brought today. I would like to further add here that this bill has exempted the customary courts under purview of Section 1 of Subclause 2 and Section 22 of Subclause 3. This bill contains 2 schedules. One schedule contains the court fees payable in the regular courts. Schedule 2 contains fees payable in the revenue courts. And the maximum court fees payable in both the cases is 11,000 only. Under Section 45, state government is competent to increase or reduce the court fees from time to time by way of notifications. Rules making power is also vested with the state government under Section 46. This bill generally speaks speaks ad valorem fees or tax. Do you have any observation in the bill? Yes, this is so I am referring the sections and observation by way of observations. Because the statement will be made by the concerned minister, So if you have some observation in the bill, you can. Just I am supporting that he need not make observations. So just I am supporting that because some of the August members, esteemed members, honorable members, do not know about the law. So I would like to throw some lights on it.
and because this is a necessary. An ad valorem tax fees is a tax that is imposed on the value of good or services. The meaning of ad valorem is at value, means while after adopting these bills by way of Arunachal Pradesh Court Fees Act, all filings, all court fees, all different litigations filed in the different courts will be charged. So I would like to inform the court members here. And the benefits of this act is there will be revenue generations, because before enactment of this court fees, in lump sum amount was being taken by the lower courts below as well as in high court, but it was not deposited in the state exchequer, and it was fully financed and amount was misused. And unnecessary litigations will be minimized. An e-filing system will be encouraged and successful, because for filing through e-file needs to add the court fees and column is there. For that reason, we could not file through e-filing system. Now, after introducing of these bills and enactment, all things will be beneficial for the litigants as well as for the state. So with that, while supporting the bills, I also extend support to the bills introduced by the Honorable Minister of Law and Justice. With that, I conclude my observations. Okay, thank you. Anyone else? I think Honorable Minister in charge may reply. I think he has done your job, I think. Honorable Speaker, sir, I am not the minister in charge, but since Honorable Chief Minister is, he has gone for an important meeting. Today is a Teachers' Day, so he has to address the teachers, all the teachers serving in Arunachal Pradesh also. So he had instructed me to reply on his behalf. So before I put up my reply, I would like to move the amendment to the Arunachal Pradesh Court Fee Bill 2023. The bill which is here to be passed does not include this amendment. So we have to keep this, put this amendment also, pass this amendment also along with this, along with this bill. So I will move the amendment. Honorable Speaker, sir, I would like to move minor amendment to the Arunachal Pradesh Court Fee Bill 2023 as below. In the present bill, section 1, within bracket 3, reads, it shall come into force on the date of its publication in the official gazette. This may be submitted, this may be substituted as, it shall come into force on such date as state government may by publication in the official gazette. This is an amendment. This is the amendment. But that's not part of the business today. This is not the part of the bill, present bill, so this has to be we can inserted in the bill. This has to be inserted in the bill also. Now, how an amendment will be inserted in the bill? It's a bill is a totally a new thing. So amendment and the bill cannot be. I don't know what does the rule say. If it's an amendment, we can take it up in a different day. Because this amendment is necessary because when we notify this, it will take some time. So we should be empowered to notify us because we have to print our own court fee stamp also. For that will take some time. So this is this amendment is necessary. Along with this bill, it can be done. Along with this bill, it can be with the amendment. Along with the amendment, this bill can be passed. Along with this. The reason for the amendments are
the Court Fee Act 1870 is yet to be repealed by the central government. The state government needs some time to print the required stamp court fee, appointment of vendors, and implementing authorities. So as and when required stamps are printed by the government or the Court Fee Act 1870 is repealed by the central government, whichever is earlier, the state government will publish the appointed date for coming into force of the Act. In the meantime, the existing court fee applicable in the state will continue to be in operation. I also would like to move an amendment in the proper fee in Schedule 1, table of rates ad valorem fee, जैसे कि honorable member अभी ने बताया, and Schedule 2 by rounding off the rates to the nearest whole number to facilitate ease of calculation and easy transaction in paying the court fee. ये मैं अभी मेरा reply में बताऊंगा. Further, the upper limit of maximum court fee is also proposed to be enhanced from 11,000, जो highest बोला था 11,000 honorable member ने अभी, इसको 15,000 for revenue generation of the state. So, with this amendment, I will put forward this Arunachal Pradesh Legislative Assembly, this Arunachal Pradesh Court Fee Bill 2023 to the House for passing. But before that, my replies is like that. Sir, जो replies था, जो पूरा का पूरा honorable member ने तो reply तो बता ही दिया गया है, तो मुझे तो कुछ कहना नहीं है अभी. जो 1870 में इसको ये जो कोर्ट फी स्टाम्प को पास किया रहा बिफोर हमारा जो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर दी हमारा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ ही नहीं था तभी ये पास हुआ रहा. और 1972 में इसी एक्ट को लेके 1870 एक्ट को लेके असम में असम गवर्नमेंट ने एक अमेंडेड बिल कोर्ट फी एक्ट पास किया 1972 में, और उसी एक्ट को लेके अरुणाचल में अभी कोर्ट फी जो एक्ट है चल रहा है अभी तक. अभी जैसे कि ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि 6 मार्च को 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को लिख दिया है कि ये जो कोर्ट फी एक्ट 1870 है उसको रिपील किया जाएगा, और अभी सभी स्टेट ने अपने अपने ये जो है जो कोर्ट फी एक्ट है इसको एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट में लागू करना है. इसको अरुणाचल प्रदेश में भी इसको लागू करना है. तो और ये लागू करने से क्या होगा, एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा. और ये क्या है, हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी का अंडर में है ये एक्ट लागू करने के लिए. और जो है ये जो फी स्ट्रक्चर है, जो अभी जो हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, कोर्ट फी स्ट्रक्चर है, ये जो है शेड्यूल 1 में है, जो है जो रेगुलर कोर्ट है उसका जो मिनिमम फीस है 55 पैसा, और शेड्यूल 2 में जो है रेवेन्यू कोर्ट में है मिनिमम जो फी पेएबल है वो 50 पैसा है. तो और जो हाईएस्ट जो अपर लिमिट है 11,000 है. तो इसको अभी अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया है कि इसको राउंड अप करना है 50 पैसा और 55 पैसा को. शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में जो है 55 पैसा को राउंड अप करके 1 रुपया करेगा और 50 पैसा को राउंड अप करके 1 रुपया करेगा. और मैक्सिमम अपर लिमिट जो भी जितना भी भारी केस हो अपर लिमिट 15,000 में होगा. तो 1 रुपया से 15,000 तक होगा हमारा जो कोर्ट फी स्टाम्प, 1 रुपया से 15,000 तक होगा. तो ये अमेंडमेंट हमको लाना चाहिए. और जैसे कि मेंबर ने कहा अंडर सेक्शन 45 ऑफ दिस 45
state government is competent to increase or reduce the court fee from time to time by way of notification. यह हमारा competency में है. Rules making power is vested with the state government under section 46. तो इसीलिए ये बिल को पास करना है. Honorable Speaker, sir. Now we'll take up for consideration of the bill. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for the consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 47 and the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 47 and the schedule stand part of the bill. Now that the question is that the clause 1, enacting formula and short title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. आवाज बहुत कमजोर है आप लोग का. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 1, the enacting formula and the short title do stand part of the bill. Shri Chaunamen, Deputy Chief Minister, may now move the motion for passing of the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Court Fee Bill 2023 be passed in amended form. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Court Fees Bill 2023 is passed. There is no business for transaction for today. I therefore adjourn the House to meet again at 10 a.m. tomorrow, 6 September 2023. Thank you so much. अमेंड करके कर करो इंसर्शन करना प्रिंसिपल एक्ट में ना प्रिंसिपल बिल में इंसर्ट करना तो नहीं है तो अमेंड बोले इसलिए कंफ्यूज हो गया स्पीकर